अगर हम बैंडविड्थ की लोअर हाफ और अपर हाफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पर होगा ओमेगा नॉट माइनस बैंडविड्थ अपॉन 2. सिमिलरली ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा नॉट माइनस प्लस bandwidth upon 2. Again, these formulas are only valid when your quality factor is greater than or equals to 10. ठीक है यहाँ तक. अब एक पॉइंट जो हमारा रह गया है वो रह गया है, यहां पर हम एडमिटेंस इंपीडेंस की बात कर रहे थे, तो यहां पर हम किसकी बात करेंगे? एडमिटेंस की बात करेंगे. तो देखिए हाफ पावर पॉइंट्स के बारे में देखते हैं क्या होगा. तो अगर हाफ पावर के बात करें तो यहां पर जो एडमिटेंस होगा √2 G, but it is angle plus 45 degree. So it is what? I think it is inductive, na? It is inductive. Okay. So it is this, and for this we have y equals to √2 G minus 45 degree. So these are the corresponding point at the half power and lower half frequency and upper half frequency. ठीक है यहाँ तक. So this is about the 18 point, that is the resonance curve of series versus parallel resonance. Definition same ही रहेगी. It is the curve down between the current and frequency. For the series resonance, current is maximum. For the parallel resonance, the current is minimum. ठीक है यहाँ तक. आगे देखते हैं और क्या बात हो सकती है पैरेलल और सीरीज रेजोनेंस से रिलेटेड. So I think it is much sufficient from the competitive point of view. आगे हम बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर, देख लेते हैं क्या होगा. ठीक है यहाँ तक. सो इसको इरेज कर लेते हैं और देखते हैं क्वालिटी फैक्टर सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस के लिए क्या क्या होगा. सो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, सीरीज क्वालिटी फैक्टर फॉर द सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस. अपना नेक्स्ट पॉइंट, द क्वालिटी फैक्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस. सो देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट. So this point we will discuss in detail because this is important point for the resonance. Okay, so first we will define the quality factor, that is 19 point of the resonance. So quality factor. Okay, so we will define the quality factor. Okay, now quality factor is what? Quality factor की definition अगर हम देखें, it is defined as the ratio of reactive energy stored to energy dissipated per cycle in the register. ठीक है यहाँ तक. So this is the definition of the quality factor. Now देखते हैं क्या आता है फॉर्मूला. quality factor is equals to 2 pi into what is the energy stored? It is half Li square in energy stored in the inductor upon what is the energy stored per cycle, that is what? Half I square R into 1 by naught. Okay, so it is half से half cancel. Okay, and if you take this, it is 2 pi L. I also cancel 2 pi F naught into L upon R. Okay, so quality factor is what? 2 pi F naught L upon R, that is equals to omega L upon R. So quality factor for the series resonance circuit is omega naught L by R. The first formula for your quality factor in case of series resonance is this. Okay, we will take for parallel resonance in later. Okay, so if you see this thing, it is omega naught, and if you take L in the denominator of R, that is omega naught upon bandwidth, and bandwidth is what? Omega 2 minus omega 1, or we can say F naught upon F2 minus F1.
So this is your formula for the quality factor first. Now what are the next formula for the quality factor? We will see. So quality factor is 1 omega naught. Omega naught is what? It is 1 upon root LC into L upon R. Okay. So we will see how we can get the exact formula. So I can write 1 upon L की power 1 by 2 C की power 1 by 2 L upon R. Okay. So here L की power 1. So 1 में से अगर हाफ देखेंगे तो कितना जाएगा देखिएगा. So it is 1 by 2 ऊपर जाएगा and it is C की power 1 by 2 and it is R. Okay. So 1 by 2 means what? Root. So I can write quality factor is equals to 1 by R root L by C. So the next formula for the quality factor is this. That is depending upon the just RL C. Okay. So quality factor is defined as the ratio of the reactive energy stored to the energy dissipated per cycle. Energy dissipated, it is per cycle in the register. ठीक है. Then we define the quality factor is this. Okay. And we have just seen the formula of the quality factor. Now what are the conclusions that we can make from the quality factor? So I just write down all the formula in one way. I'm erasing this thing. So I'm writing all the formula in one line. Quality factor is what? Quality factor is omega naught L by R, and that is also equals to omega naught R upon L, that is equals to omega naught upon bandwidth, that is also equals to 1 upon R root L by C. ठीक है. यहाँ तक होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी अब आप लोगों को. सो क्वालिटी फैक्टर के जितने भी फॉर्मूले थे यहाँ तक आ गए हैं और बाकी मैं आप सारे इरेज कर दे रहा हूँ. अब अगर आगे की बात करी जाए क्वालिटी फैक्टर में तो देखें क्या क्या हो सकता है. नाउ अगर यहाँ पर हम देखें क्वालिटी फैक्टर क्या है, अगर हम दो ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई करें देन इट इज आई एक्सएल अपॉन आई आर, देन इट इज व्हाट वीएल अपॉन वी आर, and VR is equals to V mod V if you see. So VL is equals to mod V. Okay. So the next definition of the quality factor is it is defined as the ratio of inductive or capacitive voltage to the total resistive voltage. It is defined as the ratio of inductive or capacitive voltage to the supply voltage or resistive voltage. Clear है यहाँ तक? So in example, in the next point I take the 20th point. If your quality factor is 10, and your input supply voltage is 200, okay, 200, then what is the answer? Okay, so if you see the VL is equals to quality factor times V in. Okay, now quality factor is how much? 10 and V input is 200. So your voltage across the inductor is 200 volt and voltage across the inductor and capacitor are same, is 200 volt. ठीक है यहाँ तक? So we can say your series resonance circuit is increasing the voltage. That's why your series resonance circuit is called voltage magnification circuit. So we can take a conclusion for this. Series resonance circuit is also called as voltage magnification circuit. ठीक है यहाँ तक? So your series resonance circuit is also called voltage magnification circuit. क्लियर है यहाँ तक? अगर हम पैरेलल की बात करें तो यहाँ पे पैरेलल और देख लेते हैं एक बार, then we will see more conclusion about the quality factor. ठीक है यहाँ तक? So अगर quality factor की definition की बात करें यहाँ पर भी, so quality factor is defined as the ratio of the reactive energy stored
to energy dissipated per cycle in the resistor. So we have same thing. So अगर हम बात करें 2 pi into what the energy stored in the inductor in case of parallel circuit, it is V square BL, and for the resistor it is V square G upon F naught. ठीक है यहाँ तक. So it is 2 pi F naught, and BL is what? V square से V square cancel out. BL is what? 1 upon XL. It is 1 upon XL. And what is the value of R? Oh, what is the value of G? Sorry, what is the value of G? G is 1 by R. Okay, 1 by R. So hopefully बात समझ में आ रही होगी. And XL is what? Just take 1 minute. Let's define it first. Okay. Parallel circuit. So for the parallel circuit, your quality factor is also same and definition remains same. So quality factor is defined as the ratio of the reactive energy stored to the energy dissipated in the resistance. So it is what? It is VL upon P. So it is VL into, sorry, it is B square into BL upon V square into G. Now V square cancel out. So it is BL upon G, and the next part VL is what? 1 by XL, and G is what? 1 by R. So it is R upon XL. So it is R upon XL is what? Omega naught L. Now put the values of put the value of omega naught. So omega naught is what? Omega naught is 1 upon root LC into L. So if you solve this, it is R. It is R na? It is 1 by L की power 1 by 2, C की power 1 by 2 into L. Okay, so 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, then it is R 1 by 2, and it is C is here 1 by 2. So your formula for the quality factor in case of parallel circuit is R root C by L. Okay, so please इसको ध्यान रखिएगा. अब इन दोनों को फॉर्मूलों को याद करने की देखिए मैं ट्रिक भी बताऊं आपको क्या हो सकती है. अगर ट्रिक देखें तो क्या करिएगा, इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, G L by C. ठीक है, जस्ट अपोजिट करिए. R का 1 by R, R को R से रिप्लेस कर दी, L का C और C का C. देखिए फॉर्मूला सेम बन जाएगा. सो दिस इज द ट्रिक टू गेट योर क्वालिटी फैक्टर फॉर्मूलाज. ठीक है यहाँ तक. सो ये तो हो गई क्वालिटी फैक्टर ऑफ पैरेलल सर्किट एंड क्वालिटी फैक्टर फॉर द व्हाट? सीरीज एंड पैरेलल सर्किट. अगर सिमिलर पॉइंट हम अगर यहां देखें तो क्या होगा देखिएगा. ठीक है, सो इफ यू सी दिस पॉइंट, नाउ आई विल टेक दिस पार्ट, I will take this part here. So it is BL upon G. Now if I multiply by B on upper side and lower side also, that is what? IL upon I supply. So your quality factor is IL upon I. Now IL is what? Quality factor times mod I. So if your quality factor is again suppose 10 and your supply current is 10, it is 10 and it is also 10, then your current is what? 100 ampere. So it is just behaving as a current amplifier, and your series resonance circuit is behaving as a voltage amplifier. That's why the series resonance circuit is called voltage magnification circuit, but the parallel resonance circuit is called the current magnification circuit. So I just write there parallel resonance circuit, parallel resonance circuit provides current magnification. ठीक है यहाँ तक. सो ये हमारे अब तक 20 पॉइंट हो गए हैं अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस. एक पॉइंट और देख लेते हैं कि क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ में क्या रिलेशन होता है. Then we have the last topic of this, that is what? Dynamic impedance of your resonance circuit. ठीक है यहाँ तक. So अगर हम बात करें आगे, देखिए now अगर हम देखें यहाँ से quality factor, so your quality factor is what? Quality factor is omega naught L by R, and it is what? Omega naught upon R by L, then it is what? Omega naught upon bandwidth. Okay, so
If your bandwidth is high, then quality factor is low. Clear hai? If your bandwidth is high, then quality factor is low. What is the meaning of that? Meaning of that, I'm taking first, it is a circuit whose bandwidth is this omega 1. Okay, and I'm taking the next circuit whose curve is like that. Then its bandwidth is this omega dash and omega 1. Okay, ठीक है यहाँ तक. Now this bandwidth 2 and this is your bandwidth number 1. Okay, this is your bandwidth number 1. bandwidth number 1 अगर हम देखें तो bandwidth number 1 देखें, bandwidth 1 is greater than bandwidth 2, but bandwidth is high, so quality factor 1 is less than of quality factor 2. Now अगर हम bandwidth की बात करें, जिस सर्किट की bandwidth ज्यादा है उसकी पीक कम है, बट जिसकी बैंडविड्थ कम है उसकी पीक ज्यादा है. तो दैट मींस हाई क्वालिटी फैक्टर, अगर यहां से देखें, हाई क्वालिटी फैक्टर इज ए मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ द कर्व. ठीक है यहां तक बात. सो हाई क्वालिटी, जिस कर्व का क्वालिटी फैक्टर हाई होगा उसकी शार्पनेस कैसी होगी? दैट मींस उसकी बैंडविड्थ इज लो. क्लियर है ना? जिस कर्व की बैंडविड्थ कम होगी क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, उसकी पीक ज्यादा होगी, एंड जिस कर्व की पीक ज्यादा होगी उसकी सिलेक्टिविटी कैसी होगी? ज्यादा होगी. तो अगर हम यहां से सारी चीजें कनेक्ट करें, क्वालिटी फैक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द शार्पनेस ऑफ कर्व and it is also proportional to selectivity. ठीक है. तो अगर हम देखें हाई क्वालिटी फैक्टर है, हाई शार्पनेस है, तो उसकी सेलेक्टिविटी कैसी होगी? बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ. तो मीनिंग क्या है? जिस कर्व की बैंडविड्थ कम, क्वालिटी फैक्टर हाई, उसकी पीक में शार्पनेस ज्यादा, और शार्पनेस जितनी ज्यादा अच्छी होगी उसकी सेलेक्टिविटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी. सो इन इलेक्ट्रॉनिक्स वी डिजायर हाई क्वालिटी फैक्टर सर्किट दैट हैज मोर सेलेक्टिविटी and it is peak and that have low bandwidth. Clear? So in electrical we desire high quality factor circuit to get more selective signal, because in the electronics more signal is contained in your peak. So in the next part we will see the application, that is our 21st point, and last one we will see the dynamic impedance of your सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंट सर्किट. आई थिंक हाँ, यहाँ तक जो 20 पॉइंट कवर किए हैं वो क्लियर हो गए होंगे. सो अपना नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग कवर करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो डायनामिक इंपीडेंस, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट. सो लेते हैं अपना 21st पॉइंट अबाउट द रेजोनेंस. सो देखते हैं रेजोनेंस का 21st point जो है, that is based on application. Okay. Now, see, your series resonance curve is just like that. Okay, it is having omega 1 and it is having omega 2. Okay, and it is omega 0. Similarly, अगर हम बात करें पैरेलल रेजोनेंस की, अगर बात करें तो देखें कर्व जो था उसका कुछ ऐसा था. ठीक है. अगर इस कर्व को थोड़ा सा और प्रिसाइज करें, then your curve is like that, omega 1, omega 2. अगर मैं इस कर्व की सिमिलरिटी देखूं, and it is this curve is like that. Okay, it is omega 1 and omega 2. Now this is the diagram of band pass filter, and it is the diagram of band stop filter. Okay, so your series resonance curve or your series resonance is behaving like as a band pass filter. So series resonance is an example of band pass
filter, ठीक है यहाँ तक. And your parallel resonance, here it is for parallel resonance. Parallel resonance is an example of band stop filter, ठीक है. Band stop, band reject, notch filter, whatever you say. Okay, now meaning क्या है? In band stop filter, it is past the frequency from omega 1 to omega 2 range, and it is rejecting from 0 to omega 1, and it is rejecting from greater than omega 2. That's why it is called band pass filter. But what is the meaning of band stop filter? It is passed from 0 to omega 1 and greater than omega 2, but it is rejecting omega 1 to omega 2. Okay, so this is about the application point and how it works as a filter. That the series resonance is like an example of band pass filter, and your parallel resonance is example of band reject filter. Now if you are desired to have a second order filter, then for the second order filter there must be two reactive element. To have second order filter, there must be two reactive elements, and depending upon the output across a particular element, you can design your low pass filter, high pass filter, band stop and band reject filter. मीनिंग क्या है? जब भी आप कोई RLC सीरीज या RLC पैरेलल सर्किट ले रहे हैं, तो उसमें किस पर्टिकुलर एलिमेंट के अक्रॉस आप आउटपुट ले रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा फिल्टर है. तो अगर आप दो एनर्जी एलिमेंट में ले रहे हैं, RLC सीरीज या RLC पैरेलल सर्किट ले रहे हैं, तो आपका सेकंड ऑर्डर फिल्टर बनेगा. और अगर आप एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट ले रहे हैं, लाइक RL और RC ले रहे हैं, तो आपके जो है फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर आएंगे. और फिल्टर की जो रूल है, जैसे जैसे फिल्टर का ऑर्डर बढ़ता जाएगा, देन योर सिस्टम इज मोर अनस्टेबल. सो इन जनरल वी स्टडी द सेकंड ऑर्डर फिल्टर. सो फॉर सेकंड ऑर्डर फिल्टर वी रिक्वायर टू एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट. दैट मींस RLC सीरीज या RLC पैरेलल सर्किट से आप हर तरीके का फिल्टर डिजाइन कर लोगे, और वो डिपेंड करेगा किस एलिमेंट के अक्रॉस ले रहा है. अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर लेना है, तो आप RL या RC सीरीज या पैरेलल सर्किट के ले लें. उसके अक्रॉस आउटपुट किस पे लेना है, वहां भी यही डिपेंड करता है कि अगर सपोज RC है और आप कैप्चर के अक्रॉस ले रहे हैं, यानी लो पास रेजिस्टेंस के ले रहे हैं, तो हाई पास फिल्टर डिजाइन हो जाते हैं. सो दिस इज द थ्योरी अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस. फिनिश हो गई. एक लास्ट टॉपिक, और इसमें और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि डायनामिक इंपीडेंस क्या होता है, उसको और डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसका न्यूमेरिकल पोर्शन देख लेंगे कि जो रेजोनेंस है उसमें न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, और मेरे हिसाब से रेजोनेंस के न्यूमेरिकल जो है काफी इंपॉर्टेंट है. तो लास्ट टॉपिक अपना कवर करते हैं पहले, द डायनामिक इंपीडेंस. सो देखते हैं डायनामिक इंपीडेंस क्या है. सो डायनामिक impedance, dynamic impedance, it is ZD. Okay, it is the impedance. It is the impedance offered by, it is the impedance offered by circuit, offered by the circuit. It is the impedance offered by the circuit at resonance, at resonance. Okay, now what is the meaning of that? ZD is equals to B by I at resonance. Clear? And one more thing, ZD is always greater than R. ZD is always greater than R. क्या मीनिंग है इसका? अभी एक हम प्रैक्टिकल सर्किट लेते हैं, उसे ड्राइव करेंगे, देन वी विल सी द रिजल्ट ऑफ द डायनामिक इंपीडेंस. ओके, सो आई एम जस्ट टेकिंग वन सर्किट to have the derivation of this part. Okay, so I'm just taking this diagram. It is R, it is L, and it is C. Okay, now so exactly this circuit is a practical tank circuit. It is a practical tank circuit. For the ideal tank circuit, you just remove R, then it is a practical ideal tank circuit. So we take an example of practical tank circuit.
प्रैक्टिकल टैंक सर्किट। ठीक है यहाँ तक। सो देखते हैं क्या होगा भाई ना। सबसे पहले देखते हैं y। अगर एडमिटेंस की बात करें तो इट इज y1 plus y2 because in parallel admittance is directly connected if you remember your conductance admittance property or capacitance property। ठीक है यहाँ तक। so y equals to now in first branch it is r plus jxl, the next branch we have minus jxc। now हम करते क्या है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं जैसे डिवाइड करते हैं यहाँ पहले तो so 1 upon r plus jxl, so it is j square minus minus plus it is jxc। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का देखिए तरीका क्या है। हम क्या करते हैं, इसमें r प्लस ये jxl तो है ही हमारा, इसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो इट इज r माइनस jxl, r माइनस jxl, और ये अपना ऐसा ही लिखा हुआ है jxc। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं देखिए क्या आएगा। तो ये तो हो गया हमारा r माइनस jxl और ये हो गया r स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, और ये जे ऐसे ही चल रहा है जे एक्सी। अब हम क्या करते हैं, रियल को एक तरफ कर लेते हैं और इमेजिनरी को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, सो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर और ये इसका जे कॉमन ले लेते हैं, इट इज 1 बाई एक्सी माइनस 1 अपॉन आई थिंक इट इज कॉमन ना। ओके, सो इट इज एक्सएल, हियर इज एक्सएल एंड हियर व्हाट इज दिस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। सो दिस इज योर एडमिटेंस अप टू हियर। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम आगे बात देखें तो एट रेजोनेंस imaginary part should be 0 because imaginary part should be 0 because in parallel resonance either it is series or parallel or whatever circuit your imaginary part of the impedance or admittance should be 0 क्योंकि जो रेजोनेंस पे सर्किट है वो रेजिस्टिव होना चाहिए और रेजिस्टिव सर्किट के लिए इमेजिनरी पार्ट कैसा होना चाहिए। सो किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सॉल्व करने को आ जाए, सो दिस इज द कंक्लूजन कि आप उस सर्किट का या तो इंपीडेंस सॉल्व करें या एडमिटेंस सॉल्व करें और उसमें इमेजिनरी पार्ट को 0 के बराबर रख दें, यू विल गेट योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। सो यही ट्रिक हम अपने यहाँ अप्लाई करते हैं, जो रूल है इसका। सो अगर हम इस पार्ट को देखो 0 करते हैं, 1 अपॉन एक्सी इज इक्वल टू, अगर लिख देते हैं इट इज एक्सएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। सो दिस इज जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एक्सएल इंटू एक्सी एंड इट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। तो चेक कर लीजिए एक बार। हमने क्या किया, इसका एडमिटेंस निकाला, एडमिटेंस रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिए, देन हमने क्या करा, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको 0 कर दिया क्योंकि यही रेजोनेंस की क्या है कंडीशन है, किसी भी सर्किट की रेजोनेंस की कंडीशन यही है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो देखिए क्या करते हैं, एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। ठीक है यहाँ तक। सो इट इज ओमेगा नॉट एल, इट इज 1 बाई ओमेगा नॉट सी। ओके, होपफुली ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। सो इट इज व्हाट, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट, इट इज ओमेगा नॉट एल का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। क्लियर है ना यहाँ तक बात। सो अगर हम आगे बढ़े तो देखिए क्या आएगा, यहां से तो जो है हमारा ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा एल बाई सी और आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। आगे देखते हैं क्या आएगी कंडीशन। सो अगर मैं यहां से बात करूं, मुझे चाहिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बराबर एल अपॉन सी माइनस आर स्क्वायर। ठीक है। सो ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू एल बाई सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। सो डिवाइड करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या आता है इसको। अगर मैं एल स्क्वायर से डिवाइड करूंगा देन इट इज व्हाट 1 अपॉन एल सी, बिकॉज एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, माइनस आर अपॉन एल का होल स्क्वायर। देन योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी माइनस, सॉरी, इट इज 1 अपॉन